ओके, लास्ट टाइम हमने दो तीन पेजेस बना लिए थे। हमने एक होम पेज बनाया था, एक प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाया था, एक हमने प्रोडक्ट्स का पेज बनाया था। सो नाउ वी आर लेफ्ट अप विद फ्यू मोर एंड दैट इज लेट अस चेक kfcpakistan.com। और इसके अंदर ये हमारा मेन होम पेज भी बन गया। इसके अलावा हमारा ये प्रोडक्ट डिटेल का पेज भी बन गया। फिर हम किसी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट्स का पेज भी बन गया। नाउ लेट अस सी एंड दिस, ये रह गया हमारा साइन इन और रजिस्टर का। ये दोनों मतलब दो डिफरेंट पेजेस हैं, उन पे फॉर्म्स ही हैं। सो लेट्स क्रिएट दिस साइन up form first, or register form first, and then we'll be I mean, let's quickly do that. So for that, let's come back in here and close this out everything. उसके बाद हम राउटिंग करेंगे आज ही, और राउटिंग से ताकि हमें बार बार ये कमेंट आउट और ना करना पड़े चीज़ें। सो होम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिटेल, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू हैव द रजिस्टर, और इस रजिस्टर के अंदर वी हैव टू क्रिएट एन इंडेक्स डॉट jsx, एंड अलॉन्ग विद दैट इसके साथ हमें करना पड़ेगा जी register dot css. So let's do it like RAFCE just to complete the snippet, and it's going to be the register, and that's going to be like this. इसको आप class name दे दें register wrapper. That's pretty much like this, and come inside it, and we have to give it like, क्योंकि हम bootstrap use कर रहे हैं, let's quickly open up the bootstrap to copy the form from there. So अगर आप bootstrap में जाएं, इसे open करके 5.0 the version which we are using, और उसके आप forms में जाएं this time, और forms में जाके आप यहाँ पे layouts में जाएं, तो आपके पास कुछ forms जो हैं उनके styles बने बनाए पड़े होंगे. So just quickly, in fact, get the things done. Let me complete this. Let me copy this complete form. That is right over here. उसके बाद हम इसको customize कर लेंगे. Let us see if we are having any other form like that. So we don't have. So let's copy this piece of code right from here, from the Bootstrap's documentation, which is in here. आप इसे copy करें and just paste it inside this. और इसको आप right click करके format कर लें, format document, so that आपका ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए. इनफैक्ट इसने कुछ ज़्यादा खराबी कर दी, like this. So let's do that manually. For now, like this one. So अब ये जो red हैं, ये जो रेड हैं, आपको पता है कि हम अनपेयर्ड टैग JSX में अलाउड नहीं होते. सो जितने भी इनपुट्स हैं उनके एंड पे जाके उनको क्लोजिंग टैग्स दे दें. So hopefully most of the errors would go away. So like this, and then like this, and then like this, this, and then we have to do like right this, and this, and this, close it up as well. So we are all clear with this. अच्छा, एक अक्सर हमें पता है कि चूंकि क्लास का कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का रिजर्व वर्ड है, तो हमें क्लास की जगह क्लास नेम देना होता है. इसकी वजह से हमें वार्निंग्स आ सकती हैं. सो लेट्स क्विकली डू दैट. फाइंड ऑल द क्लास कीवर्ड्स और रिप्लेस इट विद द तो यहाँ हम नेम. जी बोलें. फॉर्मिक और जब नहीं यूज करेंगे फॉर्म के लिए, क्या यूज करेंगे? जी बिल्कुल, आप यूज फॉर्मिक और करेंगे. जब वो तो इसकी फंक्शनैलिटी के लिए यूज करेंगे ना. अब पहले डिजाइन तो हमें इसी में बनाना है ना, और इसी में हम मॉडिफाई करेंगे. आप जब फॉर्मिक इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मिक के लिए फॉर्म तो यही होगा. इनफैक्ट जो आउटपुट में दिखेगा आपको, उसी के अंदर हमने मॉडिफिकेशंस करनी है. उसी की जैसी इनपुट में हमने ऑन ब्लर देना है, ऑन चेंज देना है. तो डिजाइन तो आपको HTML CSS में बनाना है, चाहे आप फॉर्मिक यूज करें चाहे आप यूज करें. ठीक है. ठीक है. So you'll be cleared out. I mean, don't worry, खुद ही पता लग जाएगा आपको. So now let's come back to this, और हम देखते हैं जी कि हाउ डज दिस फॉर्म लुक लाइक. सो यहाँ से ये एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है.
So let's come back to the root app.js file और product detail को भी comment कर दें for the time being until and unless we cover the routing. So इसकी जगह आप यहाँ पे कर लें register the component that we just made, this one, this and this. So like this, if we go back to our application, we should have that register in place. So let's do that. I don't know why it is taking longer than usual. It's still compiling. Let it be compiled. So it is compiled with one warning. So we'll check what the warning is. Okay, this is form that we have just made. और चूंकि हमें header और footer नहीं लगाया कहीं भी form में, so we do need to do that as well. So let's go and let's come inside here. या इस पूरे को उठा के आप कट कर लें. यहाँ पे आप fragment tags दे दें और इन fragment tags में आप सबसे पहले कर लें header and then that is going to be footer. वैसे एक और अच्छी प्रैक्टिस है कि हम header और footer हर पेज पे अलग अलग करने के बजाय जब हम राउटिंग इंप्लीमेंट करेंगे तो हम सिर्फ मेन ऐप में हेडर फुटर लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हर कंपोनेंट के ऊपर नीचे हेडर फुटर आना ही है, तो हमें बार बार हर पेज पे हेडर फुटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो ये काम हम तब करेंगे जब हम भी राउटिंग को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे या देखेंगे. सो विद दैट थिंग डन, लेट्स have a little bit indentation so that it becomes readable for us. Yes, and now if we go to the page, so might be कि हमने footer और header को import नहीं किया वाल. So let's do that. Header import हो चुका है automatically, but footer is not. So let's do it like this one and this one. So let's do it like footer. So this error should not be there now. So okay, perfect. So अब हमें थोड़ा सा top से margin चाहिए या padding चाहिए. So what we're gonna do is we gonna do like PT5 padding top 5. So that's the bit margin. और हम इसे देखें तो यहाँ पे हम न्यू कस्टमर के नाम से एक हेडर बना देते हैं और देन वी विल बी गुड टू गो. सो फॉर दैट व्हाट वी गोना डू इज, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है शायद हर इंटरनल पेजेस पे एक हेडिंग टाइप की कुछ चीज़, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं. सो वेयर दैट इज, आई थिंक दिस इज इनसाइड द प्रोडक्ट पेज. यस, दिस वन. सो हम इसी को फॉर द टाइम बीइंग उठा लेते हैं like this और इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं for now. So let's do that. Yep, इसको signature box की जगह हम क्या कहेंगे, that is going to be new customer और new customer. अब इसको background color भी दे दे जाके specifically, that is something that is up to you. So new customer, for the timing it is conveying message, so I'll not be touching more to this one. So now what we gonna do is अगर आपको ये लगता है कि ऊपर से पैडिंग ज़्यादा हो गई तो आप इसे कट करके यहाँ से बाहर ले आएं. सो जस्ट लाइक दिस एंड देन हमारे पास फॉर्म में क्या क्या है जी, ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, एंड देन व्हाट वी गोना डू इज वी गोना, अब चूंकि ये हमने वैसे भी फॉर्मिक में करना है तो जब फॉर्मिक में आएंगे तो हम फील्ड्स मैच कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास फॉर्म का लेआउट आ गया था. कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ईमेल है, पासवर्ड है, कॉन्टैक्ट है, वगैरह वगैरह, तो हम ये फील्ड्स को उस वक्त मैच कर लेंगे. और that's pretty much done with the register at a new customer page, and that's not the sign up, rather it should be like sign up या register. Register now, so we'll be matching all the fields as well. Now next is I mean going to, अच्छा ये जो अपना है हमारे गूगल विद जीमेल और लॉगिन विद फेसबुक, ये हम पैकेजेस यूज करेंगे npm के इन कामों के लिए, तो ये डिजाइन उन्हीं के साथ आ जाएगा, हमें मिल जाएगा. what we can now do is in fact हम यहाँ पे सिंपल बटन बना लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद हम उनको डेकोरेट कर लेंगे as per our requirement. So right inside this, right above the form, what we're gonna do is we have to place HR, which is for horizontal line, और again HR for the horizontal line, because आप अगर देखें तो ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, इसके दरमियान में दो बटन है. So bu button, that's going to have the class name
which is btn, and then btn, it's going to be DANGER, and that's going to be login with Google. And then let's copy this right below, and it's going to be like Facebook blue button, which is primary kale for the time being, and login with Facebook for now. Now that looks good. और ये दोनों लाइनें भी हैं. इसके ऊपर जो पैडिंग है ये, that needs to be little less, I mean 3 or even 2. Yep, this looks fine. अब इन दोनों बटन्स को मुझे ऊपर नीचे रखना है. तो for now what I do is I need to have D block और W100. ये बेसिकली आपकी बिल्ट इन क्लास है बूटस्ट्रैप की. D block मतलब डिस्प्ले ब्लॉक with 100%. So just copy this out and paste it right in here, and just to have a look. And then we need a margin as well. So isko aap keh le MB, which is margin bottom, like 2 pixels. That's pretty much like this. So obviously we'll come and style these buttons even with the further things. As I mentioned, okay, हम ये करेंगे, इस PT को हम खत्म ही कर देते हैं like this. Now this looks pretty much to some extent same. Now what we do is we have to actually create another form, and that is going to be the login, which is I mean, in fact this, I mean already logged in. ये text भी हमें यहाँ पे place करना है. Already registered. So right above this horizontal line, let me make this P this, and then anchor, and then इसके अंदर आप लिख लें login. जब routing करेंगे तो हम इसको भी ये already registered login इस पे क्लिक करेगा तो वो login पे हम redirect कर देंगे. But that is to be done by, in fact, once we will be implementing the routing as well, React routing. So the next thing is we have to design a login form which should be like this, and this should be obviously consisting of two parts, right? One is the left and one is the right, in fact, for this one. So what we have to do is to just close this up, come back here, and collapse everything, and then come back to the pages. And like register, we have to create another, which is the login. And inside the login, just create index.h, not html, right? ASX, and then along with the styles as well. So RAFCE, and that is gonna be like this one, login, and that's pretty much like this. Class name, that is going to be login wrapper, and that's it for now. Let us have the header and footer as well, because we need that too. So for that, just write the fragment tag, and at the top we need to have the header. Just auto import it, and then we need to have the footer as well, has been auto imported. And inside this we have to copy and paste this piece of code. And then now what we do need is we do need to have the row of the bootstrap, and then inside that we need to have call md6, and then multiply by 2. We need the two things like right here. और इसके बाद let's hide it. लेफ्ट साइड पे हमें एक चाहिए फॉर्म, और उस फॉर्म में क्या होना चाहिए, इसी तरह ये चीजें जो हमने ऑलरेडी बनाई हैं, बट वी ओनली नीड दिस टाइम 2 fields, and we can copy it from the register. So where is the register, and we can copy the form right from inside this रजिस्टर रैपर के अंदर जाके हमने सारा कुछ कॉपी कर लेना है. So this is the form.
this is the form button, this, copy this or just paste it in here. Let's have a look at that. So everything is in here though. Okay, अभी फ्रंट एंड में हमने उसे रेंडर नहीं किया और फ्रंट एंड में रेंडर करने के लिए व्हाट वी नीड इज हम यहाँ पे जाके रजिस्टर को भी कमेंट कर देते हैं एंड वी हैव टू हैव द लॉगिन. That's pretty much like this. Okay, so we have the left side I think covered. हम इसको फॉर्म को सीधा कर लेते हैं, दो ही हमें फील्ड चाहिए. तो देन कम बैक हियर और इसको हम थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं बिकॉज वी नीड टू हैव अ बिट लाइक दिस. लाइक इसको हम जरा फॉर्मेट कर ही लेते हैं like this one. So now what we have to do is with this one. Now अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ पे login with Gmail, login with Facebook वाला option still is there, and then login with social links की heading है हमारे पास top पे. So we can give it like that, login with social links. बल्कि हम इसको पहले यहाँ से copy करते हैं this like और फिर यहाँ पे आते हैं और इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं and then we can have the login with social links. With that pretty much done, login with social links. और अब हमें सिर्फ दो ही फील्ड्स चाहिए यूजर नेम और पासवर्ड की. सो एक हम इसको रखते हैं और एक हम इसको रखते हैं and the remaining are to be deleted till the last submit button. This one. Let's look at that. ये हमें अब ऊपर नीचे चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने नहीं चाहिए. So since we know that these are the column 6 and column 6, we need to make them column 12 and column 12 just to make it like that, email and password. And now instead of register now, what we're gonna do is login now. So this is pretty much like same. So now we need to have this right border as well. So what we have to do is like we can do that, but for now let's go ahead and on the right side we need to have the new customer, which we can copy right from this new customer on the right, and then we can have the text like new customer. And then a bit of piece of text over here after this one. Let's see, this text is going over here, and then after that we need to have a create account button, and for that we need to go to the components, buttons, and button with outline like this, like danger. So this is pretty much like same. So this is new CUSCOMER, new customer. So that's pretty much like this one. So that looks, obviously we can spend even in fact a little more time to let it look exactly same, but I think the structure is exactly similar. So that's pretty much with the login form as well. So the next is the store locator, and then we will be actually going to have the okay, there are a few more forms actually. If we gonna log in to here, let me show you what are the other UI pages that are hidden. In fact, that will only be visible once we log in to this particular application. So I logged into this application. Let's see what are the screens that we are going to. The first one is this my accounts. That's something which we'll come to later. But the thing that I want to show you is this piece of things. I mean, these are the
two more buttons. One is for my account, one is for logout. So we do have two in the header and we need two more. Close this. Let's collapse everything. Again, go to the source, components, header, JSX. देखें, अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने का ये फायदा होता है कि मुझे पता है हर एक कंपोनेंट इतना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज हुआ है कि कहाँ जाके किस चीज में क्या चेंज करनी है तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो मैं हेडर में गया, मेरे पास इस वक्त दो बटन हैं यहाँ पे जो कि क्या है, साइन इन, स्टोर लोकेटर, साइन इन। मुझे दो और चाहिए, तो आई इतना फ्लेक्सिबल है मेरा डिजाइन कि मैं उसको सिर्फ यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा। इसको मैं कहूंगा जी माय अकाउंट एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी लॉग आउट। सो ये हम जब अपना लॉग इन लॉग आउट करेंगे तो फिर हमें, अच्छा इसके आइकन्स जो हैं दो, माय अकाउंट और लॉग आउट का कोई आइकन नहीं है, so we need to remove these icons as well. So let's delete this thing and let's delete this thing as well. So this is the thing. Okay, so अब हम ये जब लॉगिन इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर हम ये लॉजिक लगाएंगे कि जब यूजर लॉगिन हो तो ये दो बटन शो करे और लॉगिन ना हो तो ये दो बटन शो ही ना करे, वो हाइड हो, जस्ट द वे आई एम डूइंग इट। तो पहली चीज तो मैंने ये इंप्लीमेंट कर दी। दूसरी चीज ये है, ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम इसे किसी भी वक्त बना सकते हैं, बट इनफैक्ट इसके पीछे बड़ी कहानी है कि आपका माय अकाउंट की डिटेल सारी आ जाएगी, आपके जितने भी ऑर्डर्स आपने प्लेस किए होंगे वो सारे यहाँ आएंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो ऑलरेडी आपने फॉर्म बनाया है वही चीज़, फॉर्म की डिटेल सारी यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, एंड देन द एक्सेस डिटेल्स, इनफैक्ट द पासवर्ड चेंज या चेंज पासवर्ड की लॉजिक को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, बट दिस इज नॉट अगेन द थिंग दैट वी नीड। अच्छा, टू पुट मोर फोकस ऑन, एक हमने ये पॉप आउट बनाना है, बट लेट्स चेक फॉर व्हाट एल्स इज लेफ्ट। सो लेट मी प्लेस एन ऑर्डर, लेट्स सी। मैं क्रंच बर्गर को ऑर्डर कर रहा हूँ, एक पीस ऑर्डर कर रहा हूँ, जब मैं ऐड टू बकेट करूंगा तो मुझे ये चीज शो करेगा और मुझे यहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी लाइक रावलपिंडी, दिस वन, और इसका जो एरिया है, मैं सिर्फ अगली स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ ताकि मुझे, अगर ये सच्ची में ऑर्डर हो गया तो आप पैसे देंगे इसके, बिकॉज मैं आपको सिखा रहा हूँ। एस ए सदर वाला तो है ही नहीं यहाँ कहीं पे, दैट्स सादिकाबाद, सफारी विलास, तुलसा रोड, yeah, this is Sadar, this is what, so let's click on that to check what happens when we click on the next. It might be asking me for the shipment address or something like that. So ये क्या कह रहा है जी, branch has been temporarily closed, sorry for the inconvenience. So means they are not delivering at Sadar. So let's check City Sadar Road. They are not delivering at City Sadar Road as well. I don't know what they are doing. Why are they not allowing us to move to the next page? Satellite town पे check कर लेते हैं जी, block A पे, okay, they are not actually delivering. I mean, I think उनकी online delivery की service नहीं है. So how do we move to the cart page? Where can I do that? Where can I do that? I don't have to do that. Let's try it like so guys, ये हमें अगला पेज तो नहीं दिखा रहे, आप ट्राई कीजिएगा, आपको पता चला तो मुझे भी बता दीजिएगा। बट फॉर नाउ हम इससे जो अगला पेज है, दो तीन ही है कॉमन, यानी इससे अगले पेज पे हम यूजर की शिपमेंट डिटेल लेंगे कि कहाँ वो डिलीवर करवाना चाह रहा है, वो भी एक फॉर्म ही होगा, हम बना लेंगे ऑन द गो पे। उसके बाद वो पेमेंट डिटेल, यानी जब हम एड्रेस दे देंगे, शिपमेंट डिटेल दे देंगे, ऑर्डर सारे हो जाएगी, तो फिर वो आगे देगा जी कि आपने पेमेंट करनी है, तो पेमेंट पेज पे ले जाएगा। तो हम स्ट्राइप की पेमेंट पेज भी खुद ही गेस्ट के साथ बना लेंगे, और फिर जब पेमेंट डन हो जाएगी तो फिर यानी जब पेमेंट मेथड सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर यार देगा जी कि कंफर्म एन ऑर्डर। फिर हम जब कंफर्म करेंगे तो यूजर को एक ईमेल चली जाएगी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, और हमें हमारे एडमिन पैनल पे मैसेज आ जाएगा जी कि यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, फिर हम उस ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। सो फॉर नाउ almost our UI part is done, except those three screens that will actually be shown, or that should be shown. Let me check here. Orders, personal details, access details. How should I go to the cart page? That should be simple one. इनका यही है कि उन्होंने ब्लॉक किया हुआ कि अभी ऑर्डर ले नहीं रहे, that's why, but I'll do that for you.
So for now we are done with that, and now our next part is to move to the tricky parts, and that is to go to the to implement the routing, ताकि हमारी ये जान छूटे कि जो हम मैनुअली जो है वो एक को कमेंट करते हैं दूसरे को जाके डिस्प्ले करते हैं लाइक दिस. इफ यू कम बैक app.js, सो ये हमने बाकी सारे कमेंट किए हैं, एक लॉगिन को पेज को हमने यहाँ पे रखा हुआ है. सो लेट्स इम्प्लीमेंट द part which is like React router. So let's do that for you. मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया, that's why यहाँ कुछ भी नहीं है. So React router, oh not React router, React router version 6. Make sure कि अब हमने 6 यूज करना है, वर्जन 5 को यूज नहीं करना. So for that what we need to do is we gonna just go to install it as the first step. Let's open up the separate another terminal for that. Let's do it like in the git bash. यहाँ पे मैंने npm install react router dom version 6 @6 का मतलब 6, क्योंकि 5 भी है अभी तक as a legacy पड़ा हुआ है, but we have to talk about version 6. So once installed, all you have to do is कि आपको यहीं पे डॉक्यूमेंटेशन के फ्रंट पेज पे जाना है और यहाँ से आपने इस इंपोर्ट को कॉपी कर लेना है पहले नंबर पे, और अपनी ऐप पे मेक श्योर कि आपकी ऐप पे ये राउटिंग होनी चाहिए. एंड देन इफ वी कम बैक हियर राइट बिलो, हमें ये जो ब्राउज़र राउटर है यहाँ से ये कॉपी करना है और इनसाइड द ऐप हमें यहाँ पे ये पेस्ट करना है. सो चूँकि ब्राउज़र राउटर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं, कहाँ से, ये हमने इंपोर्ट किए हैं. ब्राउज़र राउटर, राउट्स और राउट, ये 3 चीज़ें, ब्राउज़र राउटर, राउट्स और इसके अंदर राउट, ये हमें मिली हैं. सबसे पहले हमारा जो पाथ है डिफ़ॉल्ट, उस पे हम कौन से कंपोनेंट को रेंडर करेंगे, हम अपने होम के कंपोनेंट को रेंडर करेंगे. सो कॉपी दिस होम कंपोनेंट इस दिस, यानी जब भी राउट ये आए स्लैश तो होम के कंपोनेंट को रेंडर करो. जब राउट जो है आपका, इसको यहाँ से हटा दें और इसके साथ आप लिख दें जी लाइक राउट, और इसका जो पाथ है दैट नीड्स टू बी पाथ. अब ये पाथ आपने खुद डिसाइड करने हैं, ठीक है. सो वी गोना डू इज कि हम चाहते हैं कि हमारा पहला राउट हो स्लैश PRODUCTS. जब भी स्लैश प्रोडक्ट्स आए तो वो हमारा प्रोडक्ट का पेज ओपन कर दे, ठीक है, यानी प्रोडक्ट का कंपोनेंट ओपन कर दे. फिर जब पाथ आए जी हमारा प्रोडक्ट हाइफन डिटेल आए तो हमारा ये कंपोनेंट कौन सा रेंडर कर दे जी, प्रोडक्ट डिटेल आए. दैट्स प्रीटी मच लाइक दैट. एंड देन हम चाहते हैं कि जब हमारा पाथ आए जी स्लैश रजिस्टर तो हमारा कंपोनेंट कौन सा रेंडर कर दे जी, दैट्स प्रीटी मच लाइक रजिस्टर. और फिर जब हमारा पाथ है लॉगिन तो लॉगिन आए तो हमारा कौन सा कंपोनेंट रेंडर कर दे जी, लॉगिन. और आखिरी हमें नहीं चाहिए. सो दैट्स प्रीटी मच डन विद द राउटिंग. Now if we remove everything, all those extra things, and like do it, और यहाँ से आप जाएं यहाँ पे. So if I now write this only path, I should have that implemented. If I'm making any mistake, do let me know what is doing that. Okay, वगैरह जी की error absolute route path slash register nested under path slash product detail is not valid. ओके हमने शायद कहीं नेस्टिंग की हुई है. ये देखें एक राउट के अंदर 2 राउट डाले हुए, तो हमने नेस्टिंग नहीं करनी फॉर द टाइम बीइंग. ये हमने देखा नहीं, हम ये करेंगे और ये करेंगे और ये करेंगे
एंड देन ये करेंगे विदाउट नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक राउट के अंदर आप फिर मल्टीपल राउट्स को एम्बेड कर रहे हैं, और फिर ये देखें ये भी नेस्टिंग हो रही है, हमने होम का इधर भी नेस्ट किया हुआ है। सो राइट नाउ वी डू नॉट नीड नेस्टिंग, we only need simple routing. So this is like that. So hopefully this is pretty much like this. We have to format it like that, and that's congratulations. Right now हमारा जो home है सिर्फ स्लैश के साथ हमारा ये आएगा। अगर हम इसको लॉगिन करते हैं तो हमारा लॉगिन वाला कंपोनेंट आ रहा है। अगर हम इसको रजिस्टर करते हैं तो हमारा रजिस्टर का कंपोनेंट लोड होगा। अगर हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट, it's product, okay, it's products with s, not product, like this आएगा। और अगर हम इसे लास्ट वन विच इज प्रोडक्ट डिटेल करते हैं तो हमारा कौन सा पेज आएगा, प्रोडक्ट डिटेल का पेज आएगा। सो दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। नाउ हम इन बटन्स के पीछे बोलिंग लगाएंगे ताकि हमें यहाँ मैनुअली आके ना लिखना पड़े। सो गो इनटू द हेडर एंड लुक एट दैट स्टोर लोकेटर का पेज मैंने भी बनाया, सिर्फ साइन इन का बनाया है। सो गो टू द component and then header and then inside this. So what we need to do is, आपको पता है कि जब हमने ये लिंक्स को अटैच करना होता है तो हम यहाँ पे एक और चीज इंपोर्ट करेंगे, import that is link from react router DOM, और हम जहाँ पे anchor tag है we will replace that anchor tag with the link tag, और यहाँ href के बजाय यहाँ होता है to। और चूंकि ये रजिस्टर पे जाएगा या लॉगिन पे जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हम इसे कहते हैं जी ये लॉगिन पे चला जाए, और यहाँ पे भी हमने इसको क्लोजिंग टैग में लिंक देना है। सो नाउ if we are here at this page and if we click on this it will move us to the login page। यहाँ पे अब हम इस login पे क्लिक करेंगे तो that should move us to the register page। so ये अब हम जाएंगे login के पेज पे, और let's move all these anchor tags to the links so that link href की जगह to, href की जगह to, href की जगह again to, let's closing tag be like link as well। so हमने link ऊपर एक ही दफा import कर लिया है, so we don't need to import it over and over again like this, right। so अब हमने जाना है जी कहाँ पे, हमने जाना है login के पेज पे। so we have to move to the login page, और inside the login page यहाँ जहाँ हमने कहा था कि ये login, तो यहाँ हमने करना है इसको redirect to the register page अगर आपके पास अकाउंट नहीं है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, again import and then हम कहेंगे इसको link, that's going to be like that, and then this is going to be like link for opening and link for closing, and inside it we have to place it like 2, and then हमने कहना जी register, and now go back here। मैंने यहाँ पे क्लिक किया लॉगिन, यानी ये आ गया, सॉरी ये आ गया रजिस्टर पे, ये डायरेक्ट आ गया लॉगिन में। तो लॉगिन पे टेक्स्ट जो है दैट शुड नॉट बी लॉगिन बट ओके, यहाँ पे हमने कहना जी कि ऑलरेडी डोंट हैव अकाउंट GISTER रजिस्टर, हम कहते हैं जी हैव अकाउंट। तो इस वक्त क्योंकि मैं फिलहाल लॉगिन के पेज पे हूँ तो अगर उसका अकाउंट नहीं होगा तो पूछेगा डोंट हैव अकाउंट, क्लिक ऑन रजिस्टर टू एंड, और इस पे फिर रजिस्टर के पेज पे जाके उसे वापस लॉगिन पे भेजना है, वो बाद में करेंगे। अभी हम इसके क्लिक पे भी, ये बटन है इसके क्लिक पे भी हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, न्यू कस्टमर है तो न्यू कस्टमर को रजिस्ट्रेशन पे लेके जाते हैं। सो लाइक दिस वी डू हैव बटन, हम इस बटन को रिप्लेस कर देंगे विद द लिंक, इस बटन को रिप्लेस कर देंगे विद द लिंक, और इसको हम यहाँ पे टू करेंगे एंड दैट्स गोना बी लाइक register type button हटा देंगे because this is no more a button, rather this is the text। so now if we click on that, if we click on the new customer, this is what, अब यहाँ पे already login register के पेज पे जाके हमें उसे login पे लेके जाना है।
So let's go to the register page for now. Register page index.jsx, and then यहाँ पे हमें उसे कहाँ लेके जाना है? Login page. So let's have a link over here as well. Let's have a link here as well. So this link is not imported. Let's import it by default. Import. This is going to be the link from the React Router DOM, and that's pretty much like login. That's it. I think we made something. We made a mistake. Okay, this is not href. This needs to be 2. That's it. Or we are in the login page, so we can go to the registration page from here, or from here, or from here. I mean, from here as well. So everything is seems working for now. अब हम किसी भी पेज पे हैं तो इस लोगो पे क्लिक करके हमें वापस होम पेज पे आना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोगो क्लिकेबल नहीं है. सो फॉर नाउ जस्ट गो टू द हेडर पार्ट एंड देन राइट. इस लोगो को हमने रैप करना है कहाँ पे जी? लिंक टैग में. और इस लिंक को आप इसको इधर रख दें, इमेज को उसके अंदर, और इसको आप 2 दे दें. To this and this, so that it needs to go to the home page wherever it is. So currently we are at the login page or the registration page, and if we click on back, it would move us, or it would take us back to the normal page like this. So that's pretty much for today. किसी का सवाल हो तो बता दें जी, बाकी मूव करेंगे इसको नेक्स्ट डे तक. हाँ जी, any question? We have achieved pretty much in the front end. So back end पे भी अब इसी तरह quickly 1 या 2 दिन लगाएंगे. किसी का सवाल नहीं है तो that's I'm closing it for now. Then we'll obviously कल हमारा थोड़ा सा डायनामिक पार्ट होगा जिसमें हमने डेटा फेचिंग और इनफैक्ट, या फिर हम हमारा फ्रंट एंड बन गया, या कल हमने फिर एपीआई बनानी है बैकएंड की, और फिर जब बैकएंड की एपीआई बन जाएगी तो फिर हम फ्रंट एंड से रिडक्स के जरिए डेटा को लाएंगे और स्टोरेज पे बनाएंगे सारा कुछ. So if no question, then thanks for joining. I will be closing it.